everybody, good evening. आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है to our channel. And today we have somebody really special. सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, हम 7 o'clock से शुरू करने वाले हैं. बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे questions होने वाले हैं on serious topics. But we'll make sure that we answer all the questions because we have somebody really special. आज हमारे साथ मौजूद है one of the best I know in the country, a celebrity psychologist, a TEDx speaker, Mr. Akshara Damle. Akshara, welcome to the show. Thank you, Sahytya. It is a pleasure to be with you all the time. Every time I get into an interaction with you, it goes very lively and magical. Thank you so much. My pleasure. And first episode है तो आपसे पहले कौन? I mean, I'm so happy, and we're going to talk about something which is to do so much with fitness. You know, एक ऐसी Right. चीज जिसकी शुरुआत वहाँ से ही शुरुआत होती है फिटनेस की, हेल्थ की. जी. बहुत बार ऐसा होता है कि we think about बॉडी बिल्डिंग और whenever fitness जिम आता है दिमाग में, पर मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है ना. बिल्कुल सही बात है जी. जी. और कल बाय द वे कल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है. हाँ जी. क्या क्या हो सकता है? कौन सा टीम जीत सकती है? वो तो आपका क्या सबको राय पता है? है. उम्मीद मैंने अभी देख रहा था मैं इंटरव्यू कैप्टन पाकिस्तान कैप्टन का, तो उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार. तो इट वाज लाइक ओके. हाँ, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम थोड़ी छोड़ देंगे. एग्जैक्टली. हो सकता है, कुछ भी हो सकता या है, क्रिकेट रिकॉर्ड है. ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि इतनी बुरी तरीके से हारे कि कभी हारे नहीं ऐसे. We all wish that happens, है ना. Yes. ओके. तो आप सब जो भी हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, मेक श्योर आप कमेंट करते रहिए. और अगर कोई भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हैं. आज हम बात करेंगे नवरस के बारे में, इमोशंस के बारे में, किस तरीके से हम अपने इमोशंस को समझ सकते हैं, बैटल कर सकते हैं मेंटल हेल्थ, जो कि एक रूट है शायद. तो सबसे पहले जानना चाहूँगा अक्षरा कि किस तरीके से, मतलब नवरस होता क्या है और नवरस के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? नवरस हमारा जो परंपरागत शास्त्र में, मतलब नाट्य शास्त्र जो एक किताब है, भरत मुनि ने लिखा है, तो उसमें एक बहुत अच्छा, मतलब एवरी परफॉर्मेंस और परफॉर्मिंग आर्ट हैज टू हैव दीज रसास. मतलब कोई भी कला हो, वहां पे एक क्या होता है, कला रसानुभूति ही होती है. मतलब भले वो नृत्य हो, भले वो नाटक हो, या किसी भी परफॉर्मेंस में हमें ये सारे रसों का एक एक्सप्लोरेशन करने का मौका मिलता है. और नाट्यशास्त्र में ये सारे 9 रसों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि हर रस के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, ये नवरस को हमें एक ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा अलग अलग इमोशंस का एक अलग लेवल का एक्सप्रेशन है. ओके. हाँ जी. तो क्या-क्या आता है नवरस में? आई थिंक जैसे श्रृंगार और जी. डर. हाँ, बिल्कुल. उसको मैं विस्तार से बताते जाऊँगा अभी कि पहला मतलब नवरस में श्रृंगार है, उसके बाद हास्य है, उसके बाद करुणा है, उसके बाद रौद्र है, और वीर है, और भयानक है, बीभत्स है, अद्भुत है, और लास्ट वाला शांत है. अब एक-एक करके एक-एक रस के बारे में बात करेंगे आज. जी, तो बिल्कुल. जितना मैंने देखा है कि हर रस में, मतलब जब भी हम उसके अंदर घुस के उसका महसूस करेंगे, तो हमारे अंदर एक अलग लेवल का अनुभूति होती है. ओके. हाँ जी. तो in fact, one of my biggest trainings that I ever had was on exploration of Navarasas and connecting with them with our regular emotions. मतलब हम जो वेस्टर्न साइकोलॉजी में जो इमोशंस सीखते हैं, उसको नवरसा के साथ जोड़ के कैसे उसको समझने का करके we had done a study,
ओके। and it is fantastic learning for us because every rus is so experiential. It's not like कोई चेहरे से नहीं दिखाने का, मतलब काफी लोग क्या होते हैं कि अगर आप गूगल करोगे तो हुँ। हर रस के बारे में एक एक मतलब पिक्चर रहता है। जैसे शांत बोलते ही कोई लोग बस आंखें बंद करके बैठ जाते हैं ताकि वो शांत है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आंखें बंद करने के बाद तो पूरा खुल जाता है दिमाग में। बिल्कुल, हाँ जी। तो सारे थॉट्स आ जाते हैं। जी, तो इसलिए हर रस को एक्सपीरियंस करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हाँ जी, ये सारे नवरस हैं। तो जैसे आपने श्रृंगार कहा और बहुत सारी ऐसे आपने टर्म्स यूज़ किए हैं जो कि आई थिंक लव, लाफ्टर, करेज ये सारी चीज़ें आप कहना चाहते हैं, एंगर और जी, बहुत कॉमन है हर इंसान इसे महसूस करता है और जब इसकी एक सीमा होती है, एक लेवल होता है और इसलिए अपने आप को जानना, अपने इन इमोशंस को जानना ज़रूरी है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। जैसे जनरल बात करता हूँ मैं आज 20s में जो लोग हैं 40s 20 से लेकर 40s तक की उम्र के जो लोग हैं, आई थिंक हम सब बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं, प्रोफ़ेशनली, पर्सनली और सोशली, फ़ाइनेंशियली। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन रसों को जानें और किस तरीके से हम जान सकते हैं? क्या हम जान भी सकते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है, अपने इमोशंस को, कब हम गुस्सा कर रहे हैं? कब हम शायद यू नो लो फ़ील कर रहे हैं, कभी-कभी पता भी नहीं चलता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि अ, मैं वही कहता हूँ जनरली कि जो भी आजकल दुनिया में जो भी है, उनके पास अगर आप पूछेंगे कि हाउ आर यू फीलिंग? हुँ, हुँ, तो हुँ। सब लोगों का आंसर रहता है कि आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग और आई एम फीलिंग फाइन, आई एम ओके, आई एम डूइंग गुड वगैरह-वगैरह ही होता है। हुँ, 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 लेकिन हुँ। सच्ची इमोशंस को जानने के लिए बहुत मुश्किल होता है उन लोगों को। दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज़ देयर ओन इमोशंस इन द राइट सेंस। हुँ, हुँ, एंड हुँ। अभी प्रॉब्लम यहीं पे हुआ है। कल मैं कल एक मेरा क्लाइंट से बात कर रहा था, जी। तो वो शी वाज़ टेलिंग मी दैट आई एम सुपर रैशनल इन माय इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। मतलब मेरे को बिल्कुल पता होता है कि ये करना ज़रूरी है या ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हुँ, हर बार वही गलती वापस बार-बार हो रहा है। So हुँ। same pattern is getting repeated and I don't know how to come out of it despite being very intellectual person. तो वहीं पे मैंने कहा कि इंटेलेक्चुअलिटी एक अलग है, जी। इमोशनैलिटी अलग है। तो हमारे ज़िंदगी में जो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वो हुँ, इमोशन हुँ। की वज़ह से ही होता है। जैसे हम लोग खाने की चीज़ से लेके, जैसे काफ़ी हुँ, लोग जंक फूड खा रहे हैं आजकल, तो क्यों बिल्कुल। खा रहे हैं? हमें सबको पता है कि उससे खतरा है या उस वो अच्छा नहीं है, हुँ, लेकिन फिर हुँ, भी हुँ। खाते हैं। कारण ये है कि इमोशनली वी आर ड्रिवन टुवर्ड्स इट। हुँ। तो इमोशन को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। या इमोशनल क्रेविंग्स जिसे हाँ जी, कहते हैं। हाँ जी। तो ज़िंदगी में हम जो भी करते हैं, वहाँ पे एक इमोशनल ड्राइव रहता है और उसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर इमोशंस फर्स्ट एंड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू नवरसस। तो इसीलिए नवरसस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें हमारा इमोशंस को समझने का और उसको एक्सप्रेस करने का दोनों तरीके आसानी से समझ में आएगा। जी। एंड बहुत क्लैरिटी अभी मिला मुझे जिस तरीके से आपने कहा कि इमोशंस को जानना है, क्यों जानना है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। बहुत लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसे-ऐसे होना चाहिए पर कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। व्हिच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंट्रोल करे तो करे कैसे? हाँ, आजकल अब एक्चुअली टाइम नहीं है टू बी ऑनेस्ट जी, स्पेशली किसी के पास टाइम नहीं है। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसको तो कहीं न कहीं पीछे हम रखते हैं और हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं या फिर इंटेलिजेंस क्वोटिएंट यूज़ करते हैं ज़्यादा इंस्टेड ऑफ इमोशनल क्वोटिएंट को समझने के लिए। जी। तो वही प्रॉब्लम ये है कि हमें एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस ने को के बारे में किसी ने सिखाया नहीं। हमारे स्कूल्स में भी ये सारी चीज़ें नहीं सिखाते हैं। जैसे कि अभी एक और उदाहरण दूँगा क्योंकि हम नेगेटिव इमोशंस के बारे में काफ़ी बात करते हैं, हुँ, लेकिन अच्छा इमोशन जैसे श्रृंगार हो, ठीक है? हुँ, वेयर दैट इज़ वी लव। आर या वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लव
ब्यूटी एंड सो ऑन, हुँ, वहां पर भी काफी लोगों को एक्सप्रेशन करना नहीं आता. आई मीन आई हैव सीन मेनी क्लाइंट्स, especially women clients, saying or coming and telling me that their husbands are very less expressive and they do not know what's happening in their husband's mind. कि हुँ, उनको समझ में नहीं आता कि ये सच्ची में मेरे को प्यार कर रहा है या हुँ, उनका प्यार दिखाई नहीं देता. तो हुँ, हुँ, कनेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इवन मेनी चिल्ड्रन फाइंड देयर फादर्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि फादर्स जनरली रहते हैं ऐसे ही, मतलब उनको हुँ, कोई इमोशन दिखाई नहीं देता. आपने भी काफी जगह पे देखा होगा कि जनरली फादर्स आर लाइक स्टैग्नेंट बॉडीज, दे डू नॉट हैव एनी एक्सप्रेशन. हाँ, गुस्सा आता है और रौद्र तांडव दिखाई देता है, लेकिन प्यार दिखाई नहीं देता. मतलब वो एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड सेइंग दैट हाँ, पापा लोग ऐसे ही होते हैं, अपना हुँ, प्यार नहीं दिखाते हैं. लेकिन मेरे एनालिसिस के हिसाब से काफी लोगों को प्यार दिखाने के लिए भी पता नहीं होता कि कैसे दिखाएं. Right? अच्छा, So that हुँ, is where they lag behind. So it is the expression of or learning of Navarasas is हुँ, going to be so interesting thing, क्योंकि हर कोई अपना हर रस को या हर इमोशंस को एक्सपीरियंस करे और एक्सप्रेस करे, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप्स जो भी हम और लोगों से जुड़ते हैं वो हुँ, सारे इमोशंस की वजह से तो है. बिल्कुल। इंटेलेक्चुअली हम जुड़ेंगे तो बहुत टेम्पररी रिलेशनशिप होता है. वहाँ पे राइट, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं रहता है, तो हम लोग फिर आपस में कंपटीशन में लग जाते हैं. तो उससे अच्छा कनेक्शन इमोशन की वजह से होना चाहिए. और हुँ, इमोशन के वजह इमोशंस के थ्रू अगर कनेक्शन बिल्ड करना है तो हमें expression of emotions is also very important. So that is where Navarasas play a major role. ग्रेट एंड विद दिस आई एम रियली एक्साइटेड टू डाइव इनटू कॉन्सेप्ट्स की कि बहुत सारी चीज़ें जो आप बताने वाले हैं अबाउट एवरी रस और हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जानेंगे। जी. पर मीनवाइल क्या ऐसा होता है कि किसी एज में एक पर्टिकुलर रस का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी और उम्र में दूसरे रस का इन्वॉल्वमेंट ऐसा ऐसा कुछ होता है ऐसा कॉन्सेप्ट? नहीं, मेरे हिसाब से हर रस हर उम्र में आते रहता है. मतलब एज अ चाइल्ड ऑल्सो हमें प्यार भी चाहिए, हमें गुस्सा भी आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है तो डिस्गस्टेड फीलिंग भी आ सकता है, या वो हंसी मजाक भी चल सकता है. तो आई थिंक ऑल द रसास एक्सिस्ट इन ऑल एज ग्रुप्स. मतलब मैं ये नहीं कहूंगा. हाँ, लेकिन काफी लोगों को वो एक्सप्रेशन या एक्सपीरियंस करना नहीं आता तो वो अलग बात है. हुँ, हुँ, लेकिन रसानुभूति जो है, मतलब द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपीरियंस ऑल रसास एक्सिस्ट ऑल टाइम. इट इज ऑल अबाउट हाउ फार यू एक्सपीरियंस इट एंड एक्सप्रेस इट. हुँ, 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 हुँ। जी. ग्रेट, ग्रेट। तो शुरुआत अगर मैं करूँ बहुत कॉमन सवाल से कि जनरली किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा ले लेते हैं, ओके? लॉट ऑफ पीपल आर आजकल फ्रस्ट्रेटेड है, एवरी अदर पर्सन जब आप बाहर जाते हैं तो हम लोग फ्रस्ट्रेशन एक-दूसरे पे निकालते हैं, मेबी कभी-कभी पब्लिकली हो जाता है। तो गुस्सा क्यों आता है? Where does that start from? Or if you have any concept which is related, which will be helpful for the audience कि हाँ, कैसे कंट्रोल करें इस चीज़ को? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे अभी समाज में क्या हुआ है कि गुस्से को बहुत नेगेटिव तरीके में देखा जा रहा है. मतलब हुँ, कारण ये है कि गुस्सा इतना हम लोग भड़ास निकाल देते हैं ना कि वो दूसरों के ऊपर बहुत परिणाम कर देता है, नेगेटिवली परिणाम कर देता है. हुँ, फिर हुँ, उससे हमें भी तकलीफ हो जाती है, तो फिर हमें लगता है कि यार ये गुस्सा क्यों आता है. राइट. जी। तो हम लोग गुस्से को बहुत नेगेटिवली लेबल करना शुरू किए हैं कि एंगर इज वेरी बैड. हुँ, राइट. हुँ, 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 तो उस वजह से क्या हुआ है कि काफी लोग अपना गुस्सा निकालने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं. हुँ, 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 तो उस वजह से क्या करते हैं कि या उसको कंट्रोल करके सप्रेस कर देते हैं गुस्से को, और वो पैसिव एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, या ओके। वायलेंटली एक्सप्रेस कर देते हैं जिस कारण से बहुत डैमेज हो जाता है. तो दोनों प्रॉब्लमेटिक है. हुँ, और मैं ये कहूंगा कि नवरस में जो भी रस बताया गया है हुँ, वो सारे नेचुरल इमोशंस हैं.
मतलब अच्छा, anger is also a very natural emotion which exists in our I mean in our life, and we do not have to kind of suppress it. ओके। अभी मैं आऊंगा कि इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, क्योंकि सवाल वही आता है कि ठीक है, समझ में आया कि गुस्से को सप्रेस नहीं करना है, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। एग्ज़ैक्टली, इसके बाद तो फिर मैं किसी और पे गुस्सा करने वाला हूँ। हाँ, मैं जी, इसके बारे में बहुत एक उदाहरण दूँगा हाँ। कि एक बार मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था एक स्कूल में टीचर्स को, हुँ, और 2 दिन का ट्रेनिंग था। पहला दिन तो सारे टीचर्स में अनजान था, तो काफ़ी लोग मेरे को बहुत रिस्पेक्टफुली देख रहे थे। लेकिन हुँ, एक दिन खत्म होते-होते अगेन ट्रेनर बिकम्स वेरी फ्रेंडली विद द पार्टिसिपेंट्स, सो दे स्टार्टेड टेकिंग मी वेरी फ्रेंडली। हुँ, 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 तो हुँ, दूसरा दिन लंच ब्रेक से पहले मैंने उनको बोला था, सबको पार्टिसिपेंट्स हाँ, को, कि डोंट टॉक अमंग योरसेल्व्स बिकॉज़ व्हाटएवर द प्रोसेस दैट वी आर डूइंग हुँ, needs more of introspection. So all of you keep quiet, हुँ, have हुँ, lunch silently, sitting isolated, and introspect about whatever we have done in the morning first half. ओके, लेकिन मेरे को मतलब आई मीन आई हैड टू गो समवेयर एल्स फॉर लंच, सो आई वाज नॉट देयर विद देम। तो जैसे मैं उधर से निकल गया तो सारे लोग बात करने लगे। अच्छा, हाँ, और नेक्स्ट सेशन शुरू होते ही मैंने सबसे पूछा कि किन-किन लोगों ने बात नहीं करी? हाँ, तो किसी ने हाथ नहीं उठा पाया क्योंकि सब लोगों ने बात करी थी। हुँ, फिर मैंने ये बोला कि चलो ठीक है, 1 मिनट का मौन प्रार्थना करते हैं। ओके, तो सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो तो जनरली जब किसी का देहांत होता है तो श्रद्धांजलि देने के लिए करते हैं। जी, तो वो हैरान हो गए। फिर हाँ, ठीक है, ट्रेनर बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा ना। हाँ, और हाँ, सबको गिल्ट भी फ़ील हो रहा था, क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन था उसको फ़ॉलो नहीं किया था। जी, फिर 1 मिनट का मौन प्रार्थना हुआ, फिर मैंने बोला कि आज ये किए हैं क्योंकि मैंने जो बात रखी थी, हुँ, वो मर गया। जैसे आपने बात करना शुरू कर दी, तो माय हाँ, वर्ड्स डाइड राइट देयर। So the Shraddhanjali was for those words which I had told you before leaving you for the lunch break. And then I expressed my emotion of anger, saying कि why I am getting angry and how important that silence was. तो मैं इसको इतना सारा एक्सप्रेस करने के बाद हुँ, उनको सब लोगों को समझ में आया कि क्यों बताया गया था, क्योंकि उनको सब लोगों को लग रहा था कि ऐसे ही बता रहा है, ट्रेनर को और कोई काम नहीं है, ऐसे बता रहा है। लेकिन बाद में उनको समझ में आया, then we did the same exercise and then the real result came out. तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि गुस्से को बहुत आराम से समझा सकते हैं कि मेरे को इस कारण से, इस वजह से गुस्सा आ रहा है और इसको ऐसे ठीक किया जा सकता है। देन द पर्सन विल आल्सो बी इन अ रिसेप्टिव मोड। हमारा प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि हम लोग इतना भड़ास निकाल देते हैं, तो लोग हाँ, रेजिस्टेंस में आ जाते हैं कि हाँ, ठीक है, मैं करूँगा, तुम क्या करोगे, देखते हैं। हुँ, तो हुँ, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुस्से को आराम से समझाओ और बहुत असर्टिवली समझाओ, ताकि वो लोग आपको सीरियस भी लेंगे और जो आप बता रहे हो उनको समझ में भी आएगा, हुँ। और जो गलतियाँ वो कर रहे हैं, वो रिपीट नहीं होगी। दैट्स ग्रेट मीन्स किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना है। आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया कि गुस्से को भी एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से करना है। जी, और जो एक्चुअली काम कर सकता है क्योंकि बहुत लोग इस पे सोचते ही नहीं। तो बिल्कुल। डायरेक्ट सारी चीज़ें कर देते हैं और फिर वो ऑपोज़िट हो जाता है, जी, जो होना चाहिए था। जी। उस समय क्या करें कि अगर शांति से भी कुछ लोग बोलते हैं मैंने साम-दाम, दंड-भेद सब अपना लिया पर सामने वाला तो समझता ही नहीं है। तो उस समय अपने अंडरस्टैंडिंग को कितना ज़्यादा हम कितना बढ़ाएँ या फिर कितना ज़्यादा पेशेंट रहें किसी के साथ? क्योंकि हर एक चीज़ का लेवल होता है। हाँ, अभी पेशेंस मतलब अभी इस ऐसे चीज़ों में ना प्रॉब्लम ये होता है कि कभी-कभार कुछ लोग नहीं समझना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि उनको समझ में नहीं आना आता है, हुँ, लेकिन हुँ, वो समझना नहीं चाहते या रेसिप्रोकेट नहीं करना चाहते हैं। हुँ, तो हुँ, उस समय में हमें और कठिन मतलब मेथड या जो भी लेना लेना चाहिए वो ले सकते हैं। हुँ, हुँ, कठिन क्रम ले सकते हैं, क्योंकि अगेन यू कैन नॉट
काइंड ऑफ गो ऑन डूइंग समथिंग। यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ हुँ, कि हमारे जिंदगी में ना बहुत सारे बैटल्स हैं। कुछ राइट बैटल्स हैं, कुछ रॉन्ग बैटल्स हैं। जी। अब राइट बैटल जो है, जहाँ पे हमें वो लड़ने से हमें कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। हुँ, हुँ, और कुछ बैटल्स ऐसे हैं जो जो आप उसको लड़ने से आपको भी तकलीफ होगी और हुँ, उससे कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आएगा। तो हुँ, ऐसे चीजों में आप लड़ने से अच्छा उसको इग्नोर कर दो या उससे बाहर निकल के आओ, हुँ, ताकि आपका एनर्जी अच्छे लड़ाई के लिए बच जाए। हुँ, So, in case if this person is not understanding or not ready to understand, हुँ, हुँ, even after all the four things, सावधान भेद दंड करने के हुँ, बाद बावजूद अगर नहीं समझ आ रहा है, तो probably we should understand that probably it is a wrong battle and let us not go for it. Let the person understand when time comes. ओके, दैट्स अगेन मतलब कि टू मच अंडरस्टैंडिंग इज़ नीडेड समवेयर और अदर और जिस तरीके से आप लेके गए आई कुड सी ओके दिस इज़ हाउ इट शुड बी डेल्ट विथ जो हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ और आपने कितने खूबसूरती से समझाया 7-8 मिनट्स के अंदर। ऑलराइट, एक्साइटिंग। नेक्स्ट जो बहुत चीज़ होता है आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स समथिंग लाइक प्यार या फिर हास्य, प्यार में भी आपने बताया लव अबाउट द रिलेशनशिप्स बट बिफोर दैट डर। अगर किसी को बहुत लोगों को डर लगता है और वो करेज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को करने का या फिर गट्स नहीं रख पाते हैं तो उस समय क्या कर सकते हैं और ये डर क्यों होता है किसी के अंदर बिकॉज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस बिकॉज़ ऑफ फ्यूचर लॉट ऑफ थिंग्स तो इफ यू कैन टेल अस हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट डर के आगे जीत कैसे हो सकती है? चलो मैं अभी फिर इसको ऐसे लेता हूँ कि भयानक और वीर दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ, क्योंकि हुँ, ये कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस हैं। हुँ, 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 अब अगर हम बायोलॉजिकली देखें कि भयानक एक इमोशन जो है या रस जो है, ये भी एक नेचुरल रस है, इसलिए क्योंकि हमें डर लगना भी बहुत जरूरी है। For example, if you हुँ, are standing on a cliff and you feel that nothing is going to happen because you are extremely courageous, you're fearless, and if you हुँ, jump out of the cliff, then you will fall and die, right? हुँ, So, fear is also a very survival mechanism. It creates a survival mechanism, survival instinct. तो डर इसीलिए लगता है क्योंकि हमें सरवाइव करने की ये एक इंस्टिंक्ट होती है। जैसे अगर आप किसी कहीं पे आप पैदल जा रहे हो और कहीं पे सांप दिखी, तो हाँ, वहां पे डर लगता है, क्योंकि सांप एक विषकारक जंतु है, जहां जिसकी कारण से लोग मर भी सकते हैं। हुँ, वहां पे मैं अगर हीरो बन के जाऊंगा कि फिर सांप कुछ नहीं है करके मैं अगर पकड़ने जाऊंगा और सांप ने काट दिया और जिंदगी चली गई, तो फिर नुकसान हो सकता है ना। तो जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई एक इज अ वेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। मेनी पीपल आल्सो हैव काइंड ऑफ रिडिक्यूल्ड बीइंग फियरफुल, लेकिन हुँ, और बहुत सारे भाई जो है, जैसे कि अभी रिसेंटली मेरा एक क्लाइंट बता रही थी हुँ, कि वो वेरी सेफ घर पे रहती है, पूरा लॉक रहता है, लेकिन रात को हुँ, अंधेरे में डर लगता है। मतलब उनको पता है कि वहां पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हुँ, लेकिन फिर भी वो बिस्तर से उठने में उनको कठिनाई होती है। हुँ, तो हुँ, ये डर जो है, ये इसमें हमारा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे का जो पिछले मतलब पास्ट एक्सपीरियंस में कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ट्रिगर अटक गया होगा, हुँ, उसको हुँ, निकलने का आवश्यकता रहता है। और यहाँ पे एक और चीज ये बताऊंगा कि वीर के बारे में मैं बोल रहा था कि हुँ, बीइंग करेजियस। अब यहाँ पे भी काफी लोग इसको गलत समझते हैं। जो नाट्य शास्त्र में बताया गया है, जो नवरस का विस्तार में बताया गया है, यहाँ हाँ, पे वीरा जो एक इमोशन है, वीरा का रस जो है, यहाँ पे इंसान अपना वल्नरेबिलिटीज को सप्रेस करके या हाइड करके करेजियस नहीं दिखाई दे रहा है। हुँ, 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 See, that is what all of us do. Even when we have all the problems in our life, we showcase as if we are very courageous, strong individuals who are capable of doing anything and everything. No, हुँ, that is not Veera.
अब नवरस में जो वीरा है वो हुँ, और मुश्किल वाला वीरा है, जहां पे मैं अपना सारा वल्नरेबिलिटीज को फेस करते हुए, दुनिया हुँ। को सिखाते हुए, दुनिया को सामने करने का चीज जो है उसको वीरा बोलते हैं। आप सामना कर सकते हो। हाँ, अपने हाँ, वल्नरेबिलिटीज़ के साथ। जी। तो जी। सामने वाले को आप बताओगे कि हाँ, मेरे अंदर ये जो वल्नरेबिलिटी है, लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपको फेस करने के लिए तैयार हूँ, वो हुँ। वीरा होता है। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। आई जस्ट अभी अभी जो फ़िलहाल मेरे साथ हुआ अभी लाइफ़ में, व्हेन आई एम स्पेलिंग समथिंग और वहाँ मिस्टेक हो गया, देन इतना ज़्यादा थॉट्स आते हैं, ओह माय गॉड मैंने मिस्टेक कर दिया। ये सारी चीज़ें अक्सर हम सोचते हैं मैं कैसा लग रहा हूँ, बहुत सारे डर। पर हाँ इफ जी, यू आर लाइक दैट इज़ वेयर यू नीड सम सॉर्ट ऑफ करेज टू एक्चुअली फेस द वर्ल्ड विद लाइक जैसे आप हो वैसे आप हो। एब्सोल्युटली। हुँ, इनफैक्ट अगर आपने कुछ गलती करी है हुँ, और 100 लोगों के या 1000 लोगों के सामने अगर आप हाथ उठा के कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ये गलती करी है, ये गलती मेरे से हुई है, लेकिन आगे से नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये हुँ, बोलने में बहुत मतलब वीरता वहीं पे चाहिए। एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट मैं सिंस ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है तो मैं एक सौरव गांगुली का एक स्टेटमेंट को यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। ये हुँ, वीर का थोड़ा ऑपोजिट था, लेकिन उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं करके भी मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि he had told that I will not showcase my limitations to the enemy or the opposite team, हुँ, हुँ, and I will play my game, right? हुँ, By hiding our limitations or our limiting factors, we will face the team, I mean, opposite team. So that हुँ, is how we used to play the game. This is where somewhere, I mean, I'm not, I may not be quoting exactly the same wordings हुँ, जो उन्होंने बताया, लेकिन ऊपर ऊपर से यही बताया गया था उस टाइम में। आई थिंक 2000 कौन सा वर्ल्ड कप में वो जीते थे, 2003 में। इंडिया 2011 में जीती थी इंडिया। हाँ, बट अ, सौरव गांगुली वाज सौरव कैप्टन इन, गांगुली वाज़ इन 2003 कैप्टन। है ना? हाँ, उस समय का बात है ये। मैं एक स्कूल का छात्र था, लेकिन ये सारा फॉलो करता था और ये बात मेरे अंदर मतलब दबी हुई थी, मतलब दबी हुई नहीं। छप गई थी। हाँ जी, आई मीन आई हैड रजिस्टर्ड द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सौरव गांगुली हुँ, कि I generally do not showcase my vulnerability or I mean limitations. लेकिन वीर अलग है। मैं अपने vulnerabilities को दिखाते हुए भी और लोगों को फेस करके उनके ऊपर जो जीत हासिल करते हैं ना, हुँ, वो हुँ। वीरता है। एग्ज़ैक्टली एंड सच अ लवली वे ऑफ डिफाइनिंग इट कि आप ज़्यादा भी करेजियस ना बन जाएँ कि हम फियरलेस है, जिस तरीके से आपने साँप का एग्ज़ाम्पल दिया, आई कैन रिलेट नाउ एंड डर भी ज़रूरी है, लेकिन डर इतना नहीं कि क्या बोलते हैं आप कहीं न कहीं फँस जाएँ अपने साथ ही। तो क्या बिल्कुल, कर सकते हैं जो ऑडियंस देख रहे हैं इस वक़्त क्या कर सकते हैं वो? डर को जीतने के लिए ऑब्वियसली इंटरवेंशंस ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स के और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। पर कहीं न कहीं अगर उस लेवल पे नहीं है और डर लगता है, फ्यूचर से डर है, पैसों का डर है, बहुत सारे क्या होगा करियर का डर है, मेबी किसी-किसी को शादी का डर होता है, लेकिन शादी के बाद डर होना शुरू होता है। जैसे तो क्या कर सकते हैं बाय देमसेल्व्स? इज़ देयर समथिंग? बिल्कुल। अब यहाँ पे ये एक डिस्टिंक्शन लेके आना चाहूँगा हुँ, कि while we understand that fear is a natural emotion, at the same time there are many fears which are irrational. जैसे आपने बताया, fear of failure, fear of success, fear हुँ, of future, fear of marriage, fear of anything हुँ, हुँ, of these kind of things। हुँ, ये सारी चीज जो है यहाँ पे irrationality ज्यादा रहता है, मतलब कोई स्पेसिफिक कारण की वजह से हम डर नहीं रहे। ओके। जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा था, वहां पे सांप थी तो इसीलिए आपको डर लग रहा था, विच इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। लेकिन हुँ, यहाँ पे बहुत सारे चीजों के लिए हम डरते रहते हैं जो हमारा इमेजिनेशन है, मतलब वहां पे कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। ओके। तो वैसे जो भी डर है, वो सारे हुँ, डरों को हमें जीतना ही पड़ेगा, मतलब उसको एड्रेस करना पड़ेगा।
तो बहुत सिंपल सा एक मतलब मैं ये कहूँगा कि हम कैसे उसको जान सकते हैं कि ये रैशनल है कि इरैशनल है, हुँ, ताकि हमें उसके ऊपर काम कर सकें। तो सिंपल सा ये है कि व्हाटएवर आई एम स्कैर्ड ऑफ, हुँ, डू आई हैव एन एविडेंस और ए फैक्चुअल रीज़न फॉर इट? यहाँ पे मैं एक गौर गोपाल दास का एक छोटा-सा ये सु भाषण सुन रहा था। जी, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, हाँ, देयर आर 2 वेज़ ऑफ लुकिंग एट इट। One way, can you solve it हुँ, or can you not solve it? I mean, there are only 2 ways of it, right? एक एक हुँ, अगर एक प्रॉब्लम है, जैसे डर है, तो जी, आप देख सकते हो कि इसको ठीक कर सकते हो कि नहीं ठीक कर सकते हो। हुँ, If you can solve, then you don't have to worry because you can solve it. हुँ, हुँ, If you cannot solve, then also you don't have to worry राइट। because you cannot do anything about it, right? हुँ, So, whenever you have fear, if there is a valid reason, definitely you get into it and address it. And if there is an irrational reason or there is no specific reason, but still you feel, then I हुँ, think it is better, instead of you trying to do something or suppressing it, better जी, to go to a therapist and get हुँ। it addressed. All right. Okay. That completely makes sense. You know, अब डर से हम जाते हैं किसी और नवरस के तरफ जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आई थिंक लेट्स टेक लव। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त 2 दिन पहले ही वो मैसेज कर रहे थे कि ना कि मेरे रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। एंड like for example, if at all there's a breakup or something like that, how can somebody get out of that? Or what does it take to get out of this? So can you explain me a bit more about it so that I can understand some more factual things? Factual details, for example, somebody is in a relationship, okay, हाँ जी, and they ब्रेकअप हो जाता है या फिर कोई रिलेशनशिप में है ऑलरेडी क्या होता है, शादी हो चुकी है बट दे डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री okay in terms of love maybe one partner doesn't love the other partner and one partner or the other partner loves the other partner like anything इस सिचुएशन में इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में कि कैसे आगे चले अंडरस्टैंडिंग एंड सो दैट वो लव जो कहीं न कहीं कहते भी कि एक समय के बाद वो डिमिनिश हो जाता है। इट्स लाइक इट्स डिमिनिशिंग विद एज एंड लाइफ सो हाउ डू वी एड्रेस दैट? अब इसको मेजर कारण ये है कि काफ़ी लोगों को ना एक इंसान बहुत अपना लव दिखा रहा है या अपना प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं और दूसरे इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे थोड़ा विस्तार में बताइए करके बोला, हुँ, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि दूसरे इंसान को पता ही नहीं हो कि अपना प्यार को एक्सप्रेस कैसे करें। For example, if a person he's grown up in a hostel or they didn't get enough love from their parents or they have not seen their parents expressing their affection towards each other. क्योंकि again in our joint families ये हमारा again I can quote another book The Indians करके सुधीर कक्कर का एक बहुत अच्छा किताब है कि हमारे समाज में ना हुँ, प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत गलत माना जाता है। मतलब पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस लव व्हेन देयर आर पीपल अदर पीपल अराउंड इन द सेंस स्पेशली ये जॉइंट फैमिलीज में होते थे कि हुँ, women would always be together and men will be separate and mutual admiration and expression of affection between the couple would will not happen. हुँ, 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 So, all the kinds of love and affection are suppressed in front of the public, हुँ, and maybe it gets some kind of expression once in a while in their private space. So, हुँ, these हुँ, are the reasons why the children also do not know that there is something called expression of love, right? हुँ, तो आज अभी का जो जनरेशन में क्या होता है कि काफी लोग एक्सप्रेस करना उनको पता ही नहीं। आई विल गिव यू अनदर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। जी, एक अगेन मेरे आई मीन आई एम कोटिंग अनदर क्लाइंट ऑफ माइन।
she had written she had put a status on her one of her social media. I think I don't remember what it is. कि Hmm. वहां पे वो कह रही थी कि मेरा हस्बैंड को मेरे से ज्यादा अपनी मोबाइल के ऊपर प्यार ज्यादा था, Hmm. Hmm. and he used to love his motorcycle more than myself. Hmm. So I think he didn't know how to love. But I I had another counter question कि Hmm. पुराने ज़माने में भी हमने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने काम के साथ इतना जुड़े हुए थे कि परिवार के लिए बहुत कम समय दे रहे थे, लेकिन तब इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। Hmm. But today, what has also happened is in their childhood, people have not got enough affection from their parents, and hence they have lot of craving for love from their partners, Hmm. Hmm. and the partners will have to kind of compensate for all the love that we missed out in the childhood and for the present time. तो वहां पे भी बहुत सारे गड़बड़ हो सकते हैं। तो मतलब again I'm I know that I'm going little here and there because it's a very broad and very complex Subjective topic. topic. Yes. Yes, Yes. yes. All right, So I completely understand. And we have a few viewers with us. अगर आपके कोई सवाल है, we have celebrity psychologist Akshara Damle with us, who is a TEDx speaker and one of the finest in the country. अगर आपके कोई सवाल है related to any sort of issues that you are facing emotionally, तो आप पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं emotions के बारे में, नवरस के बारे में। हमने डर डिस्कस किया, गुस्सा डिस्कस किया, अभी प्यार के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपने बात की मोबाइल से प्यार हो जाता है, राइट? आजकल ये बहुत समस्या है कि 4 लोग हैं पर फिर भी अपने-अपने आइसोलेशन में। तो हाउ मच टेक्नोलॉजी एंड साइंस लाइक आजकल का जो ज़माना है गैजेट्स, वो कहीं न कहीं हमें इन इमोशन से दूर कर रहे हैं। कितना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हमारे मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है? again, electronic devices are playing a major role because हमारा जो पर्सनल कनेक्ट्स हैं पर्सनल स्पेसेस में स्पेशली फैमिली स्पेस में वो धीरे धीरे घट रहा है विच इज अ वेरी ट्रेंड। मतलब एवरीवन इज बिजी विद देयर ओन फोन हुँ, एंड अपने दुनिया में खो जाते हैं कि आपस में बात करना भूल जाते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। ये बहुत एक आई मीन बहुत कठिन। हाँ जी। Is it that कि साइंस इज़ रिलेटेड टू दिस? फॉर एग्ज़ाम्पल कभी-कभी हम कोई रील्स देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, डोपामाइन, हार्मोनल वो एंडोर्फिन्स हमें मिलता रहता है। जो कि हमें किसी और की ज़रूरत ही नहीं है उस एंडोर्फिन, डोपामाइन लेने की, आई थिंक किसी और से। जी, आई मीन दैट इज़ अगेन डेफिनिटली पॉसिबल कि हमारा जो हार्मोनल स्टिम्युलेशंस जो हैं, अगर वो यहाँ पे डिवाइसेज़ के थ्रू दे मिल रहा है, तो आपस में मिलने का कोई कारण की ज़रूरत नहीं है। अगेन हुँ, आई एम नॉट वेरी श्योर आई हैव नॉट रेड एनी स्पेसिफिक रिसर्च पेपर्स टू कोट हुँ, तो हुँ, इसलिए मैं शायद बता नहीं पाऊँगा हुँ, क्योंकि उसके शायद उसके बारे में एक अच्छा सवाल मतलब स्टडी बना सकते हैं हुँ, कि हुँ, what is the hormonal change that happens when you are engaging with a mobile device vis-a-vis when you are engaging with your friends vis-a-vis when you are engaging with your family members। काफी हुँ, लोगों को ना मेरे again this is my observation not any research per se कि जी। काफी लोगों को ना अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ बात करते हुए उनको लगता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकल के आएंगे बात करते करते ना बहुत सारे हाँ, प्रॉब्लम्स निकल के आएंगे। तो हुँ, मोबाइल एक बहुत आसान डिवाइस है जिसके माध्यम से आप हर चीज को एस्केप कर सकते हो। हुँ, राइट। तो एंड अ, ऐसा भी एटीट्यूड हो जाता है ना कि बोल के फ़ायदा तो है नहीं, बात हाँ करके फ़ायदा नहीं है। जी। तो इसीलिए शायद काफ़ी लोग मोबाइल से ज़्यादा जुड़ रहे हैं या अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से और उस वजह से भी काफ़ी बार ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है कि लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम लोग आपस में बात करेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़, प्रॉब्लम्स अपने आप निकल जाएँगे और अपने आप बहुत सारे खुशियाँ महसूस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग, प्रीटी इंटरेस्टिंग और खुशी से मुझे ध्यान आया कि एक हास्य रस जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन।
तो कितना ज़्यादा हम इसे एक्चुअली खुशी और शांति सबको चाहिए, पीस एंड हैप्पीनेस। हाउ बिल्कुल। हाउ डू वी डिराइव दैट? What is real happiness? What is real peace? And if you could tell us about that. Yeah, so again, what gives us happiness is a very big question for many of the people. I mean, मैं काफी लोगों से यही सवाल करता हूँ कि what gives you happiness, and people are confused that they do not know what exactly gives them happiness, and then they think, okay, ये जो गोलगप्पे खाने से शायद मेरे को खुशी महसूस होती है, but they are all very temporary happiness, but they do not go into the depth of what exactly happiness is, and that is Hmm. where they find it very challenging to understand their happiness. So, So it is first important to understand what gives you happiness, and not a lot of people exactly. know. हाँ जी। तो Hmm. मेरे को क्या खुशी मिलती है, क्या करने से खुशी मिलती है, या व्हाट एंड ऑल आई कैन डू, और व्हाट एंड ऑल आई कैन एक्सपीरियंस सो दैट आई कैन बी हैप्पी। कुछ Hmm. लोगों को अपने आप से बैठने में भी बहुत अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को किताब पढ़ने में खुशी मिल सकती है, कुछ लोगों को टीवी देखने में खुशी मिल सकती है, कुछ लोगों को दोस्तों से मिलने में खुशी मिल सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण से हमें खुशी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे एक हास्य के बारे में मैं एक और बात रखना चाहता हूँ कि जी। very important is how do we experience the rush of hasya or laughter. So generally we have been engaging in mocking others to get that laughter. हम लोग और लोगों को मॉक करके या उनको नीचा दिखा के हम हास्य बनाते हैं, वो बहुत गलत बात है। लेकिन एक अच्छा मतलब कॉमेडियन वो होता है जो अपने आप के ऊपर हंसे। Exactly, exactly. हाँ, तो दैट If you इज can व्हाट laugh at yourself, you can make people laugh like anything. Absolutely. So Right. that is something that we always have to be skilled with. In fact, उसमें एक और अच्छा ये मतलब एडवांटेज ये भी है कि when you are laughing at yourself, you are actually recognizing faults in yourself also. Matlab, you Hmm. may have some obsession about something, and if you are cracking a joke about it, then you are also showing that I am aware that this is a small uh, kind of issue that I also carry with myself. And So people love that, yes, actually. yes. Yeah. So laughter has to be like that, and people can be happy when they are able to understand themselves and experience the real happiness, which is more long lasting. And coming to the peace part, the Hmm. shanta, Hmm. ये थोड़ा और कठिन रस है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आंखें बंद करने से शांत नहीं होता है। Hmm. अ, भले बाहर से शांत दिखे लेकिन अंदर से पूरा आग लगी होती है। तो जी। तो जनरली शांत रस ऐसा जो रस है, मतलब ये मेरा गुरु ने मेरे को ऐसे समझाया है Hmm. कि this is the equilibrium state where you it is an equal mixture of all the eight rasas. आउट ऑफ ऑल द Okay. नौ रस, शांत रस का मतलब ये है कि हमारे अ, अंदर सारे रसों का इक्वी मिक्सचर जब होता है तब वो शांत होता है या शांत रस होता है। आई विल एक्सप्लेन यू लिटिल इन ए सिंपलिस्टिक वे। जैसे Yes. हम कहते हैं ना कि सारे रंगों को मिला के बनता है श्वेत वर्ण या व्हाइट कलर। Right. Right? Hmm. When you mix all the colors, you get white. So how is that? Again, equimixture has to be the condition there. So how do you get white is because it includes all the colors. In the same way, Shant, we represent Shant with white color, right? The Hmm. same case here as well, that the experience or the ras of Shant is a mixture of all the eight rasas, whatever we have in our rasas, which means as a person with Shanta, you Hmm. should have an access to Krodha also, I mean Raudra also, or Bibhatsa also, Hmm. Hasya also, Shringara also, Adbhuta also. So you should have an equidistance for all the rasas so that whenever you want to express or experience any of these rasas, Hmm. you have an easy access to it. So that is what it makes you a Shanta, a very
the brilliant equilibrium of all the rasas. That's like pretty interesting. But like, the reason I'm saying is, I was like talking to one of my friends, and he was like, I want to just leave the world. वहाँ पे शांति शायद मिलेगी, and it's like okay, okay, so कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि भाग जाए यहाँ से तो यार जी, शांति मिल जाएगी, जो कि somewhere we know also कि हमारे अंदर ही शांति है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया to enjoy all the eight things, equilibrium, balance find out करना, ताकि हम और experience करें and we experience actual life, जी, to be honest. मतलब that's a wonderful way of explaining, Mr. Akshara. And एक सवाल I think आपने जब हम डिस्कस करते happiness कि हम दूसरों के ऊपर हंसते हैं, तो एक सवाल मेरे मन में उठा कि people judge, and it is so very easy to judge anybody, right? Why is it like people judge? Is there any other complex or maybe other emotion that they are facing within themselves, insecurity or jealousy or kuch bhi? And what should a person who is being judged, उसे किस तरह से react करना चाहिए या फिर किस तरह से वो positively आगे बढ़े? काफ़ी बार क्या होता है कि हमारा जो दूसरों के बारे में जजमेंट जो होता है, जी। वो हमारे अंदर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का ही एक मैनिफेस्टेशन होता है। उसमें दूसरे दूसरे लोगों का कोई लेना-देना नहीं हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ ए पर्सन इज़ बीइंग जज्ड, हम्म। it is my perception with which I am judging that person, which may not be the fact. I am not getting into the factual evidences to look at what exactly is happening. For example, say suppose I am sitting like this. I mean, I can give you a very interesting example. हाँ। कि एक दिन क्या हुआ कि मैं एक मीटिंग में बैठा था और जी। मेरे को एक 10 मिनट में निकलना था और मैं ऐसे हाथ रख के ऐसे कुछ कर रहा था हाँ क्योंकि मैं हाँ। आई मीन लॉन्ग एगो आई हैड लर्नड मद्दड़े आई मीन मृदंग काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। so हाँ। once in a while I beat like this. लेकिन जनरली लोग जब एंक्शियस होते हैं तो ये हम्म। करते हैं, ठीक है? राइट। तो मेरा मैं मेरे बाजू में जो साथी मेरा बैठा था, तो उसने इसको मेरे को ऑब्जर्व किया और उसने पूछा कि क्या तेरे को एंग्जायटी हो रहा है क्या कि तुम्हें 10 मिनट में निकलना है और ये मीटिंग चल ही रहा है, तो क्या हो रहा है? हाँ। I was not anxious. I was just listening because I was very clear कि after 10 minutes I'm going to leave whether the meeting gets over or not because I had another meeting to attend. हाँ। तो मैंने पूछा ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो फिर उसने बताया कि तुम तो ये हाथ मार रहे हो ऐसे, तो काफ़ी लोग एंग्जायटी होते हुए ऐसे मारते हैं। जी। शायद मुझे लगता है कि अ, उन्होंने काफ़ी लोगों को ऐसे देखा है कि एंग्जायटी होता है ऐसे कुछ करते हुए, या काफ़ी लोग फिजेट में खेलते हैं क्योंकि अपने आप को शांत करने के लिए। जी। So this is where our own preconceived notions which lead to the judgment of the other person हम्म। without having any evidence if that is true for that person as well. In fact, काफ़ी बार क्या होता है कि हमारे semantic barriers मतलब हर कल्चर में एक-एक अर्थ है, हर एक्शन के बारे में एक-एक अर्थ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी समझते हैं जी। कि I mean, this is also quoted by one of my gurus. Ki Western psychology and the understanding of body language shows that if हम्म। you are holding your hands like this, it means you are resisting to the idea, right? राइट। My guru asked me very one interesting question. Ki in Indian culture, holding hands is also a mark of respect. It is not resistance, it is a mark of respect. Whenever there is an elderly person, whenever there is a very respectable person, you might have observed many people clasp their, I mean, hold their hands like this and यस। then stand in front of them. It हम्म। doesn't mean that they are resistant to the idea that the other person is sharing, but it only means that this person is respectful to that person. ट्रू। तो हमारा जजमेंट सारे हमारे जो प्री कंसीव्ड मीनिंग्स हैं उसके हिसाब से होता है विच इज वेरी रॉन्ग बिकॉज द एक्चुअल मीनिंग फॉर दैट पर्सन फॉर दैट एक्शन मे बी वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज फॉर अस। दैट्स अ सुपर्ब वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड मैं नहीं भूल पाऊंगा ये एग्जांपल जो आपने कोट किया, बिकॉज आई वाज लाइक आप म्यूजिक बजा रहे हो एंड समबडी इज सिंगिंग दैट यू आर एंग्शियस, आई वाज लाइक यू वुड बी सेइंग ब्रो इट्स आई एम प्लेइंग समथिंग। एग्जैक्टली। ओके।
ओके एंड हाउ लाइक कभी-कभी ऐसा होता है वी अंडरस्टैंड थिंग्स ओके सामने वाले के परसेप्शन से आ रहा है पर फिर भी बैटल चलते जा रहा है अंदर की कि जज कर रहे हैं तो हाउ टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस ऑफ बिलीफ दैट आई विल बैटल दिस आउट और मे Very बी simple. फाइन या Very simple. I have worked from, with people from who are living in slums to celebrities, politicians, ministers, bureaucrats, IAS, IPS officers, हर किसी को देखा है मैंने। और जितना मैंने एनालिसिस किया है मेरे काम के जरिए कि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो रहता ही है, भले वो कहीं पे भी पहुंचा हो, in terms बिल्कुल of the social status and the positions and prestige. तो मेरा सिंपल सा सवाल है कि मेरे को अगर कोई जज कर रहा है तो उनके अंदर भी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक? हम्म So why should I get worried because people are judging me? Because everyone have their own issue in their own ways. For हाँ example, when we go for some formal meetings, we become too conscious. Am I wearing right? Am I doing things right? Am I holding the cup right? Etc. Etc. But every culture has its own way. If I can quote another very interesting example, I'm yeah taking examples from different areas. Our Union Road Minister, Mr. Nitin Gadkari, was sharing this in one of his interviews, okay where he said in Mumbai, people put the chai into saucer and then they drink like this. हाँ They राइट don't राइट drink in the cup. And when he was in Maharashtra, so he was a kind of conditioned to drink tea like that. उनको हम्म कप से पीने से अच्छा सॉसर में डाल के पीने पसंद आता था. लेकिन हाँ when he went to Delhi, people started seeing him like, what is this? He is so हम्म uncultured person. But in Mumbai, even biggest business owners or very prestigious people also drink like that only because that is what the culture exists in Mumbai. Whereas Delhi people are like very clearly मतलब सॉसर को नीचे ही रखेंगे, उसको उसके ऊपर थोड़ा एक बूंद भी नहीं गिरेगा, वो कब से ही पिएंगे. So it is all cultural. There is हाँ nothing to judge. So, for example, maybe I do not know to eat with chopsticks, right? हाँ लेकिन चाइनीज लोग तो बहुत आसानी से खाएंगे उसके साथ. तो बिल्कुल can we say that if they start judging me that hey, this guy is he doesn't know how to eat, I can हम्म show them how beautifully I can eat with my fingers, which they may not be able to. So हम्म fundamentally, it is all in us. Should we really take the judgments, or should we be the way we are and express? And in case if there is anything that is not matching into the custom of that place, then हम्म openly express, "Hey, I do not know something like this. Can you teach me so that I will learn?" That itself एग्जैक्टली becomes a good gesture, so that हमें कोई तकलीफ नहीं होगा. और कोई भी जज करे तो आप उससे इम्पैक्ट होने के बजाय जी आप अपने आप को अलग लेवल पे एसर्ट कर सकते हो. एंड दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ ब्रिंगिंग दिस अप मैं परसों अमिताभ बच्चन केबीसी देख रहा था एंड ही कोटेड द सेम थिंग कि हम तो ऐसे चाय पीते हैं और कि आप अच्छा. ऐसे पीते होंगे एग्जैक्टली इट्स लाइक या यार आई मीन सो हम्बल एंड जब आपको कुछ नहीं भी आता है तो यू जस्ट रेज योर हैंड्स आई डोंट नो दिस एंड इवन द बिगेस्ट ऑफ लीडर्स यू नो दे डू दिस पर्टिकुलर थिंग ओके और कभी-कभी हम सोचते हैं कि कि हम क्यों पूछे जबकि बिल्कुल. हमारे दिमाग में ही चल रहा है कहीं न कहीं कि क्या सोचेंगे, क्या नहीं। आई थिंक यू हैव टू बी नेचुरल, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू हैव टू कीप गोइंग। या एब्सोल्युटली. ग्रेट, सो योर यूनिकनेस इज़ योर मे बी यूएसपी जो हम कहते हैं। Wonderful, wonderful. We'll move towards other rasas and somewhere or the other. I think we covered love, laughter, anger, fear, peace, courage, maybe. Compassion के बारे में अगर हम बात कर सकते हैं और disgust and wonder. So these three जी. things that we can cover. And compassion में I think बहुत लोग बहुत ज़्यादा compassionate होते हैं, बहुत ज़्यादा emotional होते हैं. कुछ लोगों में empathy होती ही नहीं है. So how is it like? What sort of scenes that you see in your clients, or maybe if you have something to quote? हाँ, अभी नवरस में उसको करुणा बोलते हैं. करुणा रस इज वेरी
very very deep emotion, because again ये जो empathy का जो definition हम देते हैं कि stepping into the other person's shoes, all these are very corporate terminologies. Okay. लेकिन compassion या करुणा जो हमारा नवरस में जो बताया गया है, again, compassion is not about stepping into other person's shoe, but kind of relating to other person's emotion and showing your compassion or your kind of reciprocity to that person. That is, again, this is how I am understanding compassion as, because how far you can step into other person's shoes, or how many shoes that you will have to wear. Suppose you are a leader of, say, a multinational company, and you have Hmm. some 2000 odd people who are reporting to you, or in a hierarchical structure. Hmm. If you start stepping into other shoes, then you will lose your shoe, right? Right. Right. So instead of that, what we need to do is, once we understand our emotions well, then we can relate to others' emotion also. This relatedness itself is very, very sufficient for us to be compassionate. मतलब अगर आपको दर्द हो रहा है, for I mean I can give you these examples because uh, I have worked during COVID as a counselor, chief counselor, and we used to counsel people who have lost their loved ones. Hmm. Now, uh, I mean, how can you step into their shoes? Because whoever has lost their loved ones, you cannot understand or in their own way, because how much ever you try to put your put yourself into their shoes, it is not possible. You Right. can only relate to the emotion of loss or grief that the person is going through and relate to that emotion. So that is what karuna, that is what compassion. So uh, again, even if it is happiness also, for example, I have got I mean, suppose I got an award. Hmm. Hmm. Okay, the kind of happiness that I am experiencing, maybe you will not be able to experience it in the same way, Hmm. because my It has happiness is not mine. happened with the person in the past, and Yes, that is I why we mean, cannot relate. correct, because my happiness is mine, it is not yours. So Hmm. that is where I'm saying that compassion is such a beautiful and very deep emotion, or deep rasa, where you have to start relating to the other person's emotion, and you do not have to step into their shoes, just reciprocate, relate, and then respond. Wow, great. And if we have compassion within us, it's so life and world will become beautiful, isn't it? Uh, Correct. that is Absolutely. That what. is what is required in today's world. We just need to be compassionate. For example, somebody says that, hey, I'm going through some trouble. Hmm. Then you just need to be compassionate and give that listening to that person. Hey, what is really happening? I can relate to what you are going through, probably. Hmm. And how do you want to sail through this? So, I mean, this kind of giving some time to that person may be very valuable to that person, because many people feel that they are unheard, they are not even cared. So that Hmm. is where compassion is a very, very important emotion that we need to practice in our day-to-day life, so that Hmm. we will be able to execute that in a better way. Exactly, and we need to actually help each other, through compassion and not being judgmental. Opposite हो रहा है, unfortunately somebody is saying that I am stressed या फिर मुझे अच्छा feel नहीं हो रहा है, तो कभी-कभी लोग बोलते हैं कि you need to see a doctor and all those stuff. बहुत कम समय में कुछ भी नहीं हुआ generally, or maybe something which is like not needed, कि वो तो पागल है maybe. इतने बड़े-बड़े वर्ड्स हम यूज़ कर लेते हैं चीज़ों के लिए, छोटी-छोटी बातों के लिए। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि कंपैशन रखें एंड जज ना करें एक-दूसरे का। बिल्कुल, वही वही बिल्कुल, ज़िंदगी है, राइट? सही बात है। जी, And I'm so happy that you are doing so like wonderfully well and आपने टाइम निकाला आज हम सबके लिए, all the viewers, and I hope this is really being fruitful to people who are listening to it. We have a few things and I'll quote a few questions that we can dive into. Something that has to do with disgust and wonder.
if at all? What is wonder, by the way? Yes, Adbhuta is again. I think whenever you ask about every rasa, I feel it's a very beautiful experience. Say if you go to an amusement park, how do you feel? You feel excited, Yeah. right? Or if you see a huge waterfalls, how do you feel? You feel excited. Hmm. If you go to a very peaceful place in the nature, you feel excited. This is what the Adbhuta is. I mean, recently, many people have lost that interest in their own life that they don't feel anything exciting because they are so tired of their life that there is nothing that can excite them. They are too, heavy with their emotions. So Hmm. that is something that we really need to work upon because there are so many small things. Again, I can tell you a small gesture by maybe your parent कि Hmm. आपका maybe you are feeling tired and your mother gives you some uh, chai or something. जी. Isn't it a very beautiful thing that is happening in your life? Because if that was not being given, probably you would have felt more tired, right? Or maybe a small decoration or small gift that is given to you. It is an exciting thing. If you start keeping the child in you, then you will feel excitement in everything, and that is when your life becomes so beautiful. There are so many things that you can experience and get excited about. So that again, I you might have heard ना कि काफी लोग बोलते रहते हैं कि लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो नहीं रहा. लाइफ Hmm. में कुछ एक्साइटिंग होने की जरूरत नहीं. आप एक्साइट होने के लिए आपको एक उसको देखना तो जरूरी है. You should observe these things happening around you. There are so many exciting things happening around you, but you are not able to recognize them. So that is where Adbhuta is getting lost. Even after watching a brilliant movie, you feel nothing was there. Oh, it was Hmm. okay, okay. So many people say this, but do they see those nuances of how beautifully these things have been conveyed? That is what the excitement is. So primarily, what I always say is be in the present. That is when you feel excited. If you are carrying the baggage of the past, then that itself is so heavy that you will miss out on looking into these excitements. So that is Hmm. where be in the present, you will start seeing the excitement. Even if you are eating a beautiful idli sambar, it can give you, hey, what a wonderful idli sambar it is, right? Hmm. That kind of emotion can come, but we are like, okay, it is just we are eating in absent mindedness. We do not experience every ingredient that is given or that is put in the food. That is where we are missing out. ओके. इट इज़ लाइक ऑफ कोर्स छोटी-छोटी चीज़ों को चेरिश करना, ध्यान देना उन चीज़ों पे एंड बीइंग इन द प्रेज़ेंट. लाइक आई रियली आई रिमेंबर माय मॉम आफ्टर अ टायर्ड डे शी ब्रॉट मी दिस पर्टिकुलर थिंग एंड आई वाज़ रियली हैप्पी फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट. आई फील दैट ओके, अगर नहीं होती तो फिर हाउ वुड आई हैव फेल्ट लिटरली. सो पर कभी-कभी क्या होता है ये चीज़ें जैसे इडली और सांभर व्हेन आई ईट इन द मॉर्निंग somewhere or other I feel okay or any sort of lunch or something. कभी भी मुझे लगता है okay it's the routine thing or maybe in life also it is routine. Sometimes you're not able to see the things that okay it's a routine. So it's is it important to break the routine, gift others in our family, friends, maybe partner, and maybe gift ourselves also in between वो ताकि हम लाइफ को एक अलग तरीके से देखने लगे. I think you are making a very important point. I again, what I do generally is every day morning I look towards the east, and every day the way sun rises in the east is very different. कभी कभार लाल दिखता है, कभी कभार केसरी दिखता है, कभी कभार clouds will be there. So every day it's a different day, and every day is an exciting day. Correct. So while on the one side I would say that routine is important, but Hmm. we should experience every minute of the tasks that we do so Hmm. that we do not get bored of it. If you are exercising, how beautiful it is to sweat out Right, right. ourselves. That Absolutely. is the excitement. How beautiful it is to sit back and observe or reflect on our emotions. So when we start looking at everything like a child, there will be so much of excitement and life looks so beautiful
many people, I mean, I would through this talk, I would like to share that relive or re-energize the child in you. Then you will start seeing so many exciting things, and then it will be a very interesting journey to lead this life, which will not be heavy. Rather, it will be very, very interesting and challenging. Wow, as you quote all of this, I am feeling light already. ओके पर जहाँ तक लाइट की सवाल है बहुत सारे लोग हैवी फील करते हैं मैं भी फील करता हूँ एवरीवन डज इट राइट Yeah. वो हैवीनेस से वी गेट इनटू द डिसगस्ट मोड ओके नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज इंटेंस द लास्ट रसा में भी एंड disgust say what do you mean exactly by disgust and I relate to people lot of people regretting a lot and खुद से नफरत करने लगते हैं लाइफ से नफरत करने लगते हैं तो वो जो सिचुएशन आती है how do we battle that situation? I mean, और कोई ऐसा तरीका है कि okay, I'll get to this last question, last में लेकिन about discuss first. Sure. So the feeling of disgustedness is again we call in Navrasas as bibhatsa, right? Uh, Hmm. I mean, it's feeling nasty about something, right? So if there is some dirty thing that is put in front of you, if you suddenly encounter a garbage, you Hmm. feel disgusted about it. If you get into a place which is very messy, then you feel disgusted about it. Hmm. Now, should we feel disgusted or not? Should we experience this emotion or not? It can be a question. अब यहाँ पे मेरा आंसर बहुत सिंपल है. Hmm. Unless you feel disgusted about certain things, you will not work on them. You will not work towards rectifying those things. So if unless we feel disgusted about things, matlab, say for example, I suppose a person is not doing anything in his or her life, just spending time just like that, wasting their time. जी. And if they feel disgusted about this whole fact that they are wasting their time, that is when they can start working better for utilizing their time. So, Hmm. again, disgustedness need not be seen very only negatively in the sense कि ठीक है ये बहुत heavy feeling है, लेकिन Hmm. disgustedness के कारण से ही कुछ अच्छा हो सकता है. जब हमें बुरा लगता है, तभी हम अच्छाई के लिए अच्छा की तरफ बढ़ सकते हैं, True, right? true. Yeah, I'm seeing it in a completely different light. And sometimes it says कि अपना frustration को सही जगह पे निकालो आप. Uh, हाँ, बिल्कुल. If I am frustrated that I am wasting my time, then from tomorrow or today itself I will start using that time. If I hmm. don't feel disgusted and take it, hey, okay, I accept the way I am, Right. then that is the downfall. Hmm. Interesting. So many insights about these emotions. इस तरीके से देखते नहीं थे. I mean, और कभी शायद सोचे भी नहीं थे कि इस तरह से emotions को भी हम define करेंगे या ये ज़रूरी भी है. पर lovely way of quoting every single thing. Thank you so much, Mr. Akshara. And एक आखिरी चीज़ कि कोई भी हम और भी deep में जाएँगे with every rasas. If you're watching this, make sure that you subscribe to our channel if you haven't, and let us know that what sort of questions you have or what topics do we bring into so that आपके हेल्थ और फिटनेस की जर्नी में चाहे वो मेंटल वेलबींग हो चाहे वो फिजिकल वेलबींग हो हम आपको हेल्प कर सके यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर क्लासेस दैट्स रनिंग इन द मॉर्निंग एवरी सिंगल डे in the week morning 6 to 7 6:30 to 7:30 you can message me DM in the description box to know more all right तो एक आखिरी सवाल कि अब ये इमोशंस की दुनिया को अगर हमें जीतना है तो हम क्या कर सकते हैं कौन सा पहला स्टेप ले सकते हैं पहला स्टेप ये है कि हमारे इमोशंस को पहले रिकॉग्नाइज तो करो, क्योंकि हम लोगों को इमोशंस को रिकॉग्नाइज करना ही नहीं आता. एटलीस्ट स्टार्ट विद ऑल द नवरसास. Okay. Start expressing love. Need not be only to the partner, to your parent, to your friend. And love is not romantic love alone. Love is a very pure affection which can be expressed to anybody for that matter. So it Right. is a very humanly emotion that we're talking about. So again, many people confuse Shringar Ras with only romantic love. No, that is not the case, especially when we are talking in the context of Navarasas. So start experiencing, recognizing your emotions, then experience them, and then express them.
सो आज वाओ! भी अगर ये 3 करेंगे तो आसानी से इमोशंस हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट बन जाएँगे एंड देन वी विल बी डिफरेंट इंडिविजुअल्स altogether. Probably, if I had not understood my emotions or if I had not learned to express my emotions, probably I would have sat like this and spoken like a robot. Yes, Hmm. Sahitya, I would do this, I would do that, etc., etc. But Hmm. unless we experience whatever we are talking and express it, it doesn't convey the way it has to be. So that's why emotions and expression both are very, very important and start from recognizing them. Fantastic. Thank you so much for all the insights with this, Mr. Akshara. And it was lovely having you. First episode talking about mental health seriously, which is very, very much required. And if you're watching this, make sure that was stigma आप हटा दें और वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं इस वीडियो को. Because a lot of people need it. So if you think that somebody requires it, needs it, to understand their emotions, and definitely share this with as many people as you can. Thank you so much once again, Mr. Akshara. It's always lovely interacting with you. और बहुत naturally हम बात करते हैं और सारी चीज़ों के बारे में. तो lovely. मैं भी वही बताना चाहता था कि आपके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत लाइवली रहता है एंड वेरी नेचुरल रहता है, कोई प्रिपरेशन नहीं रहता है. इट्स ऑल गोज स्पॉन्टेनियसली एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क आर रियली माइंड ब्लोइंग. I mean, I think nobody has got into a conversation with me like this. So I would like to come on board for many more such conversations. You make it so lively, and you are such a great person. So thank you for having me in this show. Thank you so much. Thank you so much for your kind words. And as I say, it's all about enjoying what we are doing, and we enjoy this. So we Yeah. will definitely get on board pretty soon about different topics. Comment section में बता सकते हैं. What are all the questions you have for us, right? Thank you so much once again, and see you in the next video. See you.